Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel, and now it's your channel, Oxford Learning. Actually, I was too much busy, so I upload video after a long time. Always I try to upload video, but I'm taking time. It's not good. From today onward, I'm going to upload video on the daily basis, inshallah, because I have thousands topic to start the innovative learning. The first thing is this is not for any other purpose. I have so many ideas to enhance the students' capabilities, their abilities, and potentials. We don't have, unfortunately, in our Pakistani educational system, we don't have any special platform for the students and for the teachers because we give the least position of to education in Pakistan, and that's why we are not moving toward the advancement. First thing is, as I have prepared the video on what is education, and inshallah, I will upload more videos about the education and learning from the environment, and how can we get it from the rote learning, and how can we change the way of thinking of the students and teachers, and how can they use and utilize the limited resources for education and to change the way of thinking. So I try on my subject, but I will try to upload other videos as well. So thing is, we move ahead with this chapter. It's electronic mail by me. I have prepared this presentation for the class 7th because my class is very good and they always do a very good job, and I am very happy because they understand what I say in my classroom and they reply me as I teach them. So, but I think this is helpful for all other students who are belong to Fazaya institutions, and if anyone else is studying this syllabus of computer science, it's really helpful for them as well. So electronic mail is a very common topic, but I'm going to teach you through the presentation and through the practical. We move ahead and let's see. Here I have pasted the book page of a book, and here is chapter number 14. It's electronic mail. It's all about the mail. So read first of all the paragraph. If you find something difficult, I discuss all the words of difficult words and their terms, why they are using these words here, what are the meanings in an easy word. Here is electronic mail or email is one of the most important services provider. Services provided by the internet, because in without internet electronic mail cannot work, so that's why they are using the internet word here to provide the mail service. Emails are widely used for both professional and private purposes. Here is uses of the mail. Professional means we are using in banks to maintain our accounts and in different factories and other organizations and NGOs and many other things from where you are getting the money. These all are the professional. And the second thing is teaching is also a profession, so we are using this for this profession as well. And I think the most powerful tool we can use for the teaching as computer or electronic media. And next is the private purposes. Means if you have your computer at home and you are using to communicate with your friends, families, and you want to send something, you want to receive something, we use this for a private purposes, and you can just secure your data here. That is the uh, private purpose. As you know, we use it personally to communicate with our dearest ones and for with our friends, and if you share your pictures, everything is the private purposes. You just send the greeting cards to your family and best wishes, to wish them birthday. All these things are called your private purposes. This is the also the part of your electronic mail. You use electronic mail for such purposes. In fact, they are one of the most important modes of communication in professional setting.
Modes mean a way, a method, and here they are defining that this is the most important mode because this is the basic mode of communication. If you want to talk with your friends and you want to discuss some matters with detail, we use electronic mail. Commonly we are using the WhatsApp for this, but if you have some documentation and you have some papers, some electronic papers and some electronic documents in the form of presentations, in the form of PDF files and everything, and you want to send your details, you want to write something, means type something, and by attaching all these things as well, you want to make a bundle of your information, you can use the email. These all things we can do through the WhatsApp, but people always prefer the electronic mail to define their purpose and to explain their motive. So, hence, you should know how to use and operate emails properly. I think everyone knows about the use of mail, but again, I am going to tell you all the steps. And we commonly use, normally, we send or receive the mails, and we never bother what is rest in the box, in email box, and what other options are available in your email box, and what is the purpose, because we never investigate the functionalities and functions of the electronic mailbox. It provides so many things. So we will discuss about all this in this chapter. We will understand some of the basic of using emails. Now we talk about the learning objectives. Learning objectives are the basic part of this syllabus, and it's really a good thing. I always like to share these learning objectives with my students. Don't leave these points, because these points are the essence of the chapter. If you explain all the chapters, student will surely come to know that what they will get after reading and after studying this chapter. So I discuss the learning objectives. By the end of this chapter, you will be able to, they are talking to the student, they are conversating with the students, and they said that after reading of this chapter, after studying of this chapter, end of this chapter, they will be able to define mail, means the proper definition of the email, and history of the email, like why we are using and where we are using. They will be able to define about the email. Then they will able to explain use an email service to create an email account. If you don't have any account, you want to create the new one, then how can you do it, which services, which method, which form you will fill, and how you can fill the perfectly your form in email to create new email. Send emails with attachments. Attachment means, sending email means simple mail. If you are writing something, if you are typing your message only and you want to send it, is a simple email. But if attachment means, if you have something to send, like in the form of picture, like in the form of document, email provides a facility to attach your document with that mail and you can send it. This is called attachment. We will learn about the attachment. So students will be able to learn about sending email with attachment. Organize emails using different folder labels. Here are some other options. These options are available in your email box, and after reading this chapter, you will be able to organize mail. That if you have some sensitive mails, yeah, your sensitive data, like you don't want to keep in the inbox, you can make another folder to keep your secret mails in that box. So that's why they are saying that organizing emails using different folders and label. And you can apply the labels of you can apply the label on your mails as well. So students will be able to know about all these things. Understand the legal and moral implications in the case of unauthentic use of mail. Here are some issues normally our people face because they get some illegal or spam mails. How they can handle it, how they, first of all, they should understand the theme of the mail, and then how can they handle such cases. And unauthentic way of or unethical use of email. Case of unethical, sorry, is my mistake. Understand
the legal and moral implication in case of unethical use of email. Unethical mean the things which are not uh, up to the mark, and they are not up to the standard. They have some censored material. Such type of mails are unethical use, or if the someone is using the abusive language, that is also the unethical use of mail. So you can just get rid from all these conditions, situations, by knowing the details of mail. So these are the learning objective. Move ahead using email. Here is a definition, small definition of an email account. An electronic message. Email stands for electronic message because we use electronic form of sending and receiving, form to send and receive your message. So that's why we say we use computer, and computer is an electronic device. So that's why we use the electronic message that can be sent from one person to another person on a network. In simple terms, emails are messages that are sent using the internet. Emails are widely used in professional world to facilitate easy and quick communication because it is not time consuming task to send mail to someone. We can just send the mail quickly, and after that you can get the answer on the spot. If we compare this method with the manual post office methodology, it's really different. And it's post office, if you send something through the post office, it's time consuming, and we are not sure about and we can't get the confirmation of our letter, if the letter is on destination or not. But if we send through the email method, we are sure, because your sent item box tells you that your mail is now in the box of your destination. So email eliminates the need of using paper and send messages. Elimination means to remove something from the system, because we are not using papers to sending mail, and it is saving your papers. We can send your message whatever you want to send and how many messages you want to send. It's up to you. So it eliminates your paper or paperwork. This is a lot of paper, which is extremely beneficial for our environment. They are talking about environment because पेपर जो है वो किससे बनता है, आपके ट्रीज से बनता है. सो दैट्स वाई इट्स इन जो है वो बहुत ज़्यादा आपके एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल होगा कि आपके दरख्त जो है वो वहाँ पे रहेंगे और नहीं कटेंगे. और उसके बाद क्या होगा कि आपकी एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही नीट क्लीन हो जाएगा, आपको पोल्यूशन नहीं होगा, आपको एक प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो मुहैया करेंगे ट्रीज. सो दैट्स वाई ये पेपर सेव करते हैं. पेपर सेव करने से एक चेन बनती है जिससे ट्रीज सेव होते हैं. Next paragraph is to send an email. You need to first create an email account. This email account is based on unique address called email address. This email address has unique identifier name and domain name of the service. For instance, abc at the rate of example.com is an email address with abc as a unique identifier name, and example.com is a domain name. So we are using the domain Gmail, and we are using our own name, but always choose the specific name or special unique name. अगर क्योंकि आपका नाम अगर यूनिक भी है, लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी लोग उस नेम से एड्रेस बना रहे होंगे, वो तमाम लोग इंटरनेट में मौजूद हैं. अगर उनका नाम पहले से यूज़ हो चुका है तो आप उस नेम से एड्रेस नहीं बना सकेंगे. आपकी जो यूनिकनेस है वो यूनिकनेस वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है कि आपका जो एड्रेस बन रहा है उसके साथ या उससे मिलता जुलता कोई और एड्रेस नहीं बना होना चाहिए, वरना आपका एड्रेस नहीं बनता. सो आई ऑलवेज ऐड द नंबर्स like 009, 0020 and 040 at the rate of 0, like this. I always use different things.
So here is ABC is unique identifier. Like ABC is here instead of your name, and example.com is like gmail.com is a domain name. So this is all about using email, that how you can use the successful methodology to send or receive your mail. एंड द नेक्स्ट थिंग इज एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे इससे, आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी मिल सकती हैं कि जो आपको आपके ऑर्डिनरी सिस्टम से नहीं मिलती हैं. देयर आर मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईमेल. यहाँ पे उन्होंने कुछ थोड़े से बताए हुए हैं, बट वी हैव सो मैनी एंड माय स्टूडेंट्स रोट सो मैनी मैथड्स, सो मैनी एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. एंड मैंने उनको ये वाली असाइनमेंट दी थी एंड दे डिड वेरी ग्रेट work, and now they are able to write in your own words, because I always appreciate my students whenever they write in their own words. So fast, you can send a message to anyone around the world with an email address and internet connection within a second. The first advantage is it's the fastest method to communicate with each other. You send your message and you can get the answer. If the person is online and he or she has read your mail, then she or he will reply you in seconds, and you can communicate. No matter the person is in another continent, he will reply you, and no barrier is on the way. Free of cost, only internet connection is required. You pay for the internet connection only, but sending and receiving mail is free. But अगर हम ordinary mail की बात करते हैं, you can see ordinary mail में आपको एक टिकट लगाना पड़ता है. पोस्ट मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि किस तरह से आप टिकट लगाते हैं उसके ऊपर, और उसके बाद कैसे आप मेल पोस्ट ऑफिस से सेंड करते हैं, वो भी मैं आपको चीज़ गूगल से सर्च करके दिखाती हूँ अभी, क्योंकि मैंने इसमें प्रेजेंटेशन में ऐड नहीं किया था कि किस तरह से अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग द पोस्ट मेथड, तो उसको आपको पहले इन्वेलप लेना पड़ता है, उसके बाद आप उसके ऊपर टिकट लगाते हैं एंड देन आप उसको सेंड करते हैं. वो 3 और 4 डेज में वहाँ पहुँचता है, बट यू आर नॉट कन्फर्म्ड कि आपको पहुँचता भी है या नहीं. तो वो चीज़ जो है एक डिफरेंट हो जाती है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं है. और लेकिन यहाँ आप जितनी मर्जी मेल्स कर लें इस फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है. Convenient, you can send message to one and more people together. अगर आपने, if you have some invitations and you are going to use your email address, and your friends senders are your friends, sorry, receivers are your friends, and they are more than 10 and more than 10 भी, और इसके अलावा और भी ज़्यादा हो सकते हैं. और if you want to send that message together, you can just type your address BB एंड CC में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, और आप एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेसेस पे भी इसको सेंड कर सकते हैं, और एक ही वक्त में चंद सेकंड्स में आपका मैसेज जो है वो तमाम फ्रेंड्स को एक साथ मिल जाएगा. तो ये एक आपका कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए. देयर आर मेनी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू दैट लेट यू क्रिएट फ्री ईमेल अकाउंट्स. Let us create an email account on the Google's email service called Gmail. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पोस्ट ऑफिस का जो लेटर होता है वो किस तरह का है. Then I am going to create a Gmail account, so check it. एंड दिस इज़ द एनवेलप. ये देख सकते हैं आप, जो हमारे पोस्ट ऑफिस में यूज़ होते हैं, एंड उसके ऊपर टिकट्स लगाते हैं हम, और उन टिकट्स के प्राइजेस पे करते हैं. उसके बाद यू सेंड द डेस्टिनेशन, और इस फॉर्म में हम पहले किया करते थे. एंड आई शो यू द पोस्ट, ये वाला भी देखें, इस तरह का जो है ना वो एनवेलप यूज़ होता था राइटिंग और लेटर के लिए. जबकि अब हम ईमेल के थ्रू यू कैन सेंड एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवन. एंड दिस इज़ द पोस्ट लेटर बॉक्स. ये एक वैसे बड़ी खूबसूरत सी चीज़ लगती है. और इसमें ये भी है कि आप अपना लेटर इसके अंदर डालते हैं, यहाँ से पोस्ट मास्टर जो है वो कलेक्ट करता है, सॉरी जो पोस्ट जो होता है आपका पोस्ट मैन, वो कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद डेस्टिनेशन पे पहुँचाता है. और इट्स रियली अ फिजिकल टास्क. बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये चीज़ें जाती हैं, लेकिन आज भी आपके पार्सल्स वगैरह जो हैं वी रिसीव थ्रू द पोस्ट ऑफिस. बट मैथडोलॉजी जो है वो चेंज हो चुकी है, एंड वी आर वर्किंग ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग ईमेल्स.
अब हम बनाते हैं हाउ कैन यू क्रिएट ईमेल एड्रेस। और ईमेल एड्रेस को बनाने के लिए जो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, साइन अप ऑप्शन भी यूज़ साइन अप। और उसमें क्या है, अगर आपको डायरेक्टली यू आर अनएबल टू गेट दैट, मतलब आपको लगता है कि आपको डायरेक्टली से उस साइट का, उस फॉर्म का लिंक नहीं मिलेगा, तो हर चीज़ का एक ही इलाज है हमारे पास, पाकिस्तान में भी और हर जगह दुनिया में। वी गूगल द थिंग, वी यूज़ द सर्च इंजन गूगल एंड साइन अप देयर। Let's move and let's start the email address, how we can create account on Gmail. Here is a Google, मैंने खोल लिया हुआ है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग Gmail sign up। ये sign up के ऑप्शन आ गए, click here and when you click here the first option is available to create your Google account। Gmail stands for Google account। So हम यहाँ पे जब क्लिक करते हैं, it provides us a form। यहाँ पे आपको कहता है कि आप अपना फर्स्ट नेम एंटर करें, जैसे कि मैं अपना नेम एंटर करती हूँ शहनीला, ठीक है। मेरा लास्ट नेम नौरीन है। आई एम गोइंग टू एंटर हियर नौरीन, यहाँ नौरीन एंटर कर दूंगी। और इधर इफ़ आई है, ये मेरा यूज़र नेम बना दिया उसने, वो कह रहा है कि अवेलेबल है शहनीला, लेकिन उसने डिफरेंट तरीके से किया है इसको। हम शहनीला नौरीन, ये लेट्स चेक द अवेलेबिलिटी। हम जब मूव करेंगे, यहाँ पासवर्ड, इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अपने पासवर्ड, यहाँ पे वो कह रहा है टेक अनदर नेम, क्योंकि शहनीला नौरीन के नाम से पहले से भी बहुत ज़्यादा आईडीज़ बन चुकी हैं, तो इस वजह से यूज़ एन अदर ईमेल एड्रेस। यहाँ पे देखें मैंने लिखा है नीचे ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो शहनीला नौरीन 258 है, तो मैं ये चूज़ कर लेती हूँ। इट्स गुड, क्योंकि मेरा नाम स्ट्रेट में आ रहा है। एंड हेयर वी यूज़ द पासवर्ड, और पासवर्ड आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ DATABAS डेटाबेस, यहाँ शो करके दिखा देती हूँ क्योंकि ये ईमेल एड्रेस तो मैंने नहीं यूज़ करना। डेटाबेस 2020 दोबारा से मैं यहीं पे ईमेल एड्रेस लगाती हूँ DATABAS 2022, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस मैंने इस तरह से कर दिया हुआ है। ये सॉरी जो पासवर्ड है वो मैंने इस तरह से स्ट्रॉन्ग किया है। देखें ज़रा कि ये क्या बताता है हमें कि ये स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक ये स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम फॉर्म पे आगे जाते हैं, नेक्स्ट पे कर देते हैं। ये आप देख चुके हैं यहाँ पे हमने क्या चीज़ें एंटर की हैं। इट्स सो ईजी, आप बहुत ही आसानी से जो है वो ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर। सो वी मूव अहेड। यहाँ पे वो आपसे कहता है कि अपना फ़ोन नंबर एंटर कीजिए, तो यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे। मैं सॉरी अपना यहाँ पे नंबर तो एंटर करूँगी, बट आई एम अनएबल टू शो माय नंबर टू एनी वन, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा म्यूट करूँगी। यहाँ मैंने अपना फ़ोन नंबर एंटर किया है, रिकवरी ईमेल एड्रेस। आई हैव अनदर ईमेल एड्रेस, मैं आई एम गोइंग टू एंटर इट। ये मैंने एंटर किया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर सकते हैं। मैं रैंडमली कोई भी डेट, कोई भी डे लगा रही हूँ। ये मैं कुछ भी लगा रही हूँ, ये करेक्ट जो है वो नहीं है, ये कर रही हूँ। उसके बाद जेंडर में आप मेल फीमेल वो करेंगे, देन नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब जब फॉर्म को आप नेक्स्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, इट टेक्स टाइम टू चेक योर डिटेल्स। ये देखिए आपका आईडी जो है वो ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है। एंड इसने आपसे कोई भी चीज़, कोई भी कोड कुछ नहीं मांगा, और ये आपका आईडी जो है वो कंफर्म बन चुका है। अभी वी एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, क्लिक ऑन आई अग्री। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, इट मूव्स अहेड। हम इन चीज़ों को पढ़ते नहीं, वी नेवर रीड ऑल दिस थिंग्स, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ईमेल एड्रेस बन चुका है, एंड हेयर इज शहनीला नौरीन 258 के नेम से, और पासवर्ड आप सबको पता है, लेकिन मैं इस एड्रेस को यूज़ नहीं करूँगी। दिस इज़ फॉर द, और ये मैं अपने जीमेल बॉक्स में चली जाती हूँ। एंड व्हेन आई गो टू द जीमेल बॉक्स, यहाँ पे आपको यू कैन गेट द फर्स्ट मेल, और फर्स्ट मेल मुझे आई होगी गूगल की तरफ से। एंड
वो मुझे बताएंगे कि वेलकम बोलेंगे और इस तरह से जो है वो हम ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं. इट्स सो इजी. एंड इफ़ यू अप्लाई, देखिए गूगल की तरफ से मुझे मेल आई, गूगल कम्युनिटी टीम की तरफ से. आई हैव रिसीव्ड अ मेल एंड आई ओपन इट. Now my inbox is ready. I can send and receive mail through the Google, through the Gmail address. It's easy for me. I can attach the mail. I can make the folders and everything. और ये जो मेरा वीडियो है, इसके बाद अभी हमारा कुछ बहुत कुछ बाकी है इस चैप्टर में, तो we will हमारा ये जो वीडियो है, मैंने आई हैव रिटन टू बी कंटिन्यूड बिकॉज आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस चैप्टर. इसको अगर मैं कम्प्लीटली कवर करती तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाता और इंटरेस्टिंग भी नहीं रहता. सो दैट्स वाई मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके ये चीज़ें समझाई हैं. आई होप कि आपको कंप्यूटर के सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर के सब्जेक्ट को कवर करूँगी, इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई टू डू जस्टिस विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. कैन वेट फॉर my next video after the to be continued. I will upload the whole chapter and smart preparation for the examinations as well. So keep watching my channel Oxford Learning and try to subscribe it. Stay in touch and give me your suggestions and your comments. Send your comments and how can I improve this channel for the world, for the students, and in the for the innovative learning as well. So I need your suggestions. Your suggestions are really precious for me. Thank you so much. Stay blessed and Allah Hafiz.